this lecture, we will discuss about the manufacture of NaOH from Brine. So, concentrated aqueous solution of sodium chloride is placed in a special apparatus known as Nelson cell for the manufacture of NaOH. तो हम NaOH को कैसे बनाएंगे ब्रिन सोल्यूशन से. सो ये बता रहे कि कंसनट्रेटेड aqueous solutions of sodium chloride यानी ब्रिन इज प्लेस्ड, इसको हम रखेंगे. एक स्पेशल एपरेटस होता है जिसको कहते हैं नेल्सन सेल, तो उसमें हम रखेंगे, तो उससे हम ना NaOH को बनाएंगे. और नेल्सन सेल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब. दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ स्टील. इट इज परफोरेटेड. This perforated tube acts as a cathode. Graphite anode is suspended in the U-shaped tube. The cathode is coated with asbestos. The asbestos separates the anode from cathode. तो ये करेगी ये जो यानी कि जो नेल्सन सेल होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं. ये हमारे पास नेल्सन सेल है. तो यहाँ पर ये ग्रेफाइट नोड है एंड दिस इज द कैथोड. ये कैथोड है हमारे पास. और ये हमारे पास सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस, इसको हम ब्रिन कहते हैं. ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये वाला this one. So porous asbestos lining. This is porous asbestos lining. This one. And this is the sodium chloride to be in here. And this is the hydrogen gas which will be out from here. This is the steam to be in, and you can say this is NaOH. So now let's come towards this. You can say that the U-shaped tube. The tube is made up of steel. It is perforated. This perforated tube acts as a cathode. So this is the cathode. Perforated tube. This perforated tube acts as a cathode, and the cathode is coated with asbestos. So you can say this is asbestos, porous asbestos is coated in the tube. The asbestos separates the anode from the cathode. So during the electrolysis, the chlorine is produced at the anode. So you can say this is the chlorine. This is the chlorine which is produced at the anode. It is collected at the chlorine outlet. So this is the outlet of chlorine which is collected. Hydrogen gas is produced at the cathode. Hydrogen gas को हम cathode के ऊपर बनाएंगे. It is collected at the hydrogen outlet. So this is the hydrogen outlet. This is the chlorine outlet. So during this reaction, sodium hydroxide is also produced. इस रिएक्शन के दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है. The sodium hydroxide is collected in the catch basin. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ये catch basin में
तैयार हो जाता है placed under the U-shaped tube. This process, the hydrogen, chlorine and sodium hydroxide is produced at the same time. इस प्रोसेस में के दौरान जो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक ही टाइम में पैदा होते हैं, यानी तीनों चीज़ें एट ए टाइम बन जाती है. तो this is the electrolysis of aqueous sodium chloride. Now, so the saturated Brine solutions ionized as follow. This is sodium chloride. This produces sodium and chloride ions, and this is water, and it dissociates into H plus and H ions. So this is the saturated Brine solutions ionized as follow. You can say this is the saturated Brine solution, which is ionized. When the electrodes are connected to the battery, the positive ions, sodium and hydrogens, move towards the cathode. जब हम बैटरी के साथ इनको मिलाते हैं इलेक्ट्रोड्स को, तो पॉजिटिव आयन सोडियम एंड हाइड्रोजन ये कैथोड की तरफ मूवमेंट करते हैं. सिंस हाइड्रोजन हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू पिक अप इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि हाइड्रोजन की जो सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन्स पिक करने की वो ज़्यादा होती है कैथोड से सोडियम के मुकाबले में. सोडियम के मुकाबले में हाइड्रोजन की जो है ना जो टेंडेंसी होती है, जो सलाहियत होती है वो इलेक्ट्रॉन पकड़ने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो सोडियम के मुकाबले में ज़्यादा होती है. सोडियम के मुकाबले में ज़्यादा होती है. तो इसलिए therefore hydrogen ions picks up electron to form hydrogen gas. तो इसलिए फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है. और सोडियम आयंस क्या करते हैं, सोडियम आयंस आर नॉट रिड्यूस्ड टू, इंस्टेड दे कंबाइन विद OH आयन. सोडियम आयन जो होते हैं वो यानी रिड्यूस नहीं होते, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते, बल्कि ये OH के साथ मिल जाते हैं. तो ये जो सोल्यूशन के अंदर OH प्रेजेंट होता है उसके साथ मिल जाते हैं और कि NaOH caustic सोडा को बनाता है, which make the solution alkaline. While the chloride or chloride ions or the chloride ions move towards the anode where they give electrons to the electrode. क्लोराइड आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दे देता है. यहाँ पर बताया कि दिस इज द hydrogens can gain two hydrogens, atoms can gain two electrons to form 2H. This is reduction occurs, and then two atoms of hydrogen form H2. Similarly, two sodium atoms combine with NaOH to form caustic soda or NaOH. Because it's known that this is, we can say that the hydrogen ions picks up electron to form hydrogen gas. This is the hydrogen gas, it picks up electron to form hydrogen gas, and hydrogen gas. Now, sodium ions are not reduced, instead of they combine with OH ions. Sodium ions cannot gain electrons, combine with OH ions to form relation to form caustic soda. You see caustic soda, which make the solution alkaline, and this solution is alkaline solution. While the chloride move towards the anode, and chlorides, this is the chlorides which move towards the anode, where they give electrons to the electrode, and so the chloride ions give electron to the anode. So
So oxidation occurs. Uh, so this is the two chlorine atoms combined to form chlorine. So the overall reaction will be sodium chloride will combine with water to produce caustic soda, hydrogen, and chlorine. These are the two gases produced along with the caustic soda. And this is the Brine solution, you can say, concentrated solution of Brine to form NaOH, hydrogen gas, and chlorine. So this is the chlorine is, you can say, this is collected here, and hydrogen is collected here. And this is the saturated solution of NaCl. So this one, you can see this is the saturated solution of NaCl. And this is the Brine asbestos coating on cathode. And this asbestos prevents separates the cathode from anode. Now next one is, you can say, corrosion and its prevention. The meaning of corrosion to a number of people is rust. अक्सर लोग जो corrosion है उसको rust समझते हैं कि ये rusty होता है. अब ये the word rust is more specifically used for iron, whereas corrosion is commonly defined as the deterioration of a substance, usually a metal, or its properties because of a reaction with its environment. तो corrosion क्या होता है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं? तो corrosion का मतलब हम बहुत से लोग समझते हैं कि ये क्या होता है, रस्ट होता है. दिस इज रस्ट. रस्ट क्या है? रस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिकली टू आयरन, फॉर आयरन. ये रस्ट यानी आयरन के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली. जबकि corrosion को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? The deterioration of substance, metal, or its properties because of a reaction with its environment. यानी deterioration of substance, metal, यानी metals या substance जो होता है, substance का, किसी substance का जब deterioration हो रहा होता है, यानी अगर वो मेटल की सूरत में है substance, deterioration कैसे होगा? जब ये environment के साथ reaction create करेगा. यानी अगर कोई मेटल एक्सपोज है environment में, तो उसकी जो environment के साथ reaction होगी उसको हम कहेंगे deterioration. Now the term corrosion and rust are almost synonyms. तो ये जो corrosion है, corrosion और rust ये दोनों synonyms है, ये दोनों सेम चीज़ है, सेम नाम है. Corrosion is slow and continuous eating away of metal by environment or surrounding. Corrosion जो है ये क्या है? ये मतलब स्लोली मेटल को जब इन्वायरमेंट से कंटेक्ट पड़ता है तो इन्वायरमेंट उसको आहिस्ता आहिस्ता खाता है. तो जिसकी वजह से यानी इस कंटिन्यूस जो खाने का अमल है, यानी अगर कोई मेटल हो इन्वायरमेंट में एक्सपोज है, मिसाल के तौर पर एक लोहे का पीस बाहर पड़ा हुआ है, तो वो यानी इन्वायरमेंट में अब एक्सपोज हो गया, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जंग लग रहा होता है, उसको खा रहा होता है इन्वायरमेंट. उस यानी जो जो यानी उसको डिटेरियोरेशन हो रही होती है उसको हम कहते हैं corrosion.
Corrosion usually starts at the exposed surface of the metals. Corrosion is naturally occurring spontaneously phenomena, and it drives the material to its lowest possible energy state. Corrosion जो ये एक नेचुरल फिनोमिना स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है जो स्पॉन्टेनियस यू कैन से फिनोमिना और ये मेटल्स को lowest possible energy state में ले आते हैं. It is an oxidation reduction process which takes place by the action of air in the presence of moisture with the metals. तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जो कोरोजन है यानी वो कब होता है जब एयर का एक्शन होता है यानी मेटल के ऊपर जब एयर इसके ऊपर लग जाती है मेटल के ऊपर और उस एयर में मॉइस्चर मौजूद हो तो वो उस दौरान ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है कोरोजन है इसको कोरोजन बोलते हैं तो the most common example of corrosion is the rusting of iron. Corrosion की जो common example है वो rusting of iron है. Rusting of iron. The corrosion of iron is commonly known as rusting. The necessary condition for rusting is moisture and air. There will be no rusting in water vapors from the air or air free from water vapors. Iron rusts by combining the oxygen in the presence of water to form brown hydrated mass ferric oxide. So, rusting of iron, the corrosion of iron is commonly known as rusting. जब लोहे को जंग लग रहा होता है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं. ये कह कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग इज मॉइस्चर इन एयर. हवा में नमी की मौजूदगी की वजह से ये रस्टिंग है ना हो जाता है moisture in air. So we can say there will be no rusting on in water vapors free of air. यानी रस्टिंग नहीं होगी अगर पानी में अगर there will be no rusting in water vapors free of air or air free from water vapors. यानी अगर एयर में वाटर वेपर मौजूद नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगी या अगर वाटर वेपर में हवा नहीं है अगर वाटर में वेपर जो जिसमें हवा नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगी या अगर हवा में वाटर वेपर्स नहीं है तो फिर भी रस्टिंग नहीं होगी. आयरन रस्ट्स बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो लोहे की जो रस्टिंग होती है वो क्यों होती है क्योंकि ऑक्सीजन जो है कंबाइन हो जाते हैं पानी की मौजूदगी में. तो ये क्या बनाते हैं ब्राउन हाइड्रेटेड मास फेरिक ऑक्साइड बनाता है. तो ड्यूरिंग रस्टिंग कैसे दिस इज example given. This is a rust. Fe23 and I did it. So you can say this is oxygen, presence of oxygen in the air. So we can say the rusting takes place because the presence of moisture in the air.
so it produces rusting. So similarly, this piece of iron is placed, you can say, if it is placed in water. So if the air is present in the water, then rusting will occur. So this is the rusting of iron. So the chemistry of rusting. की केमिस्ट्री क्या है, उसकी क्यों होती है, उसकी केमिस्ट्री क्या है. Dents and stains are the site for the process of rusting. जिस जगह पर डेंट्स या स्टेन्स लगा होता है वो वहाँ पे रस्टिंग आसानी से हो जाती है. These sites are called anodic regions. तो ये anodic regions होते हैं, and following oxidation reduction takes place on these sites at anode. Iron to Fe plus 2 plus 4A. तो the loss of electron damage, this loss of electron damage the metals. तो ये जो loss of electron है ये वाला, यानी आयरन क्या करते हैं, Fe+2 फॉर्म में जाके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मेटल को डैमेज करता है. यानी मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उसकी वो डैमेज हो जाता है, उसकी रस्टिंग हो जाती है. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द मेटल शीट. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मेटल शीट में मूव करते हैं to a region of higher concentration of oxygen, जहाँ पे उस रीजन में जहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, and water near the surface. These cells act as a cathode where electrons react with water and oxygen to form hydroxide ions. ये जो सेल्स होते हैं ये एज ए कैथोड काम करते हैं, ये एज ए कैथोड काम करते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद वाटर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस. तो ये यहाँ पर वाटर है, दिस इज वाटर एंड दिस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, दिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस. These electrons come from here. This is so the rusting of iron produces the electrons. So with metals lose electrons, these electrons on, and these electrons in the presence of oxygen reacts with the water to produce OH. And you can say here this is the Fe plus 2 and ferrous. This is the 4 OH. So next one is the Fe plus 2. The ferrous is then converted, Fe plus 2 is then converted into Fe plus 3 and it loses 1 electron. So this Fe loses 1 electron to produce Fe plus 3. Fe plus 3, this one. So Fe plus 3 is further oxidized by atmospheric oxygen to form hydrated Fe plus 3 oxide, Serasto. So we can say here Fe is in plus 2 oxidation state and this is Fe here is in plus 3 oxidation state. So Fe in plus 3 oxidation state, we can say this one is Fe plus 3 and then react with OH. OH comes from this one. So this one. This reaction, this is OH, this is OH, and this is the F plus 3. This is F plus 3. So this you can say reacts with each other. This is Fe plus 3. This is 3OH to produce FeOH3, and this is called rust.
So the rest is then formed. So you can say that first metal will lose two electrons to produce Fe plus 2 form, plus you can say this is for 2 iron, this is 2 electrons will be lost by then, and then this Fe plus 2 will be converted into Fe plus 3 by losing one electron. So this is you can say if we can remove this 2 electrons instead of, we can say this is the 1 Fe produce 2 electrons, because this is the plus 2 charge, it will lose 2 electrons. And in case of ferric, we see that this is the Fe plus 2, so this one, and this produces 1 electron. You can say this is converted into Fe plus 3, so this one, and so this one combines with that of OH. This combines with this OH to produce FeOH3. This is a rust. So the rust mass is soft and porous in nature, and therefore cannot prevent the further atmospheric action. रस्ट होता है वो पोरस होता है, सॉफ्ट होता है, तो ये मजीद जो एटमॉस्फेरिक एक्शन है वो उसको यानी स्टॉप नहीं कर सकता। एटमॉस्फेयर का मजीद एक्शन होता है, मजीद जंग लग रहा होता है कि जो रस्ट की जो कोटिंग होती है वो सॉफ्ट होती है। तो नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हाउ टू प्रिवेंट corrosion. So you can say that corrosion can be prevented by a number of methods depending upon the circumstances of the corroded metal. Corrosion prevention techniques are generally classified into 6 groups of the techniques. The following: first one is removal of stains. The region of stains in an iron acts site for corrosion. When the surface of the iron is properly cleaned and stains are removed, it prevents the process of rusting. कह रहा है कि अगर हम स्टेन्स को हम रिमूव करें तो जो जहाँ पर स्टेन पड़ा होता है आयरन में जो स्टेन पड़ा होता है वो वहाँ पे कोरोजन लग जाती है। और जब हम सरफेस हो जो आयरन होता है जहाँ पर स्टेन्स पड़ा होता है उसको हम क्लीन कर ले, साफ कर ले, स्टेन्स को रिमूव कर ले, तो वहाँ पे रस्टिंग जो नहीं होती। तो सिमिलरली नेक्स्ट वन इज पेंट्स एंड कोटिंग। Paints and other organic coatings are used to protect tomatoes from the corrosion effects. So besides this, modern paints contain combination of chemicals called stabilizers. This will provide prevention against not only corrosion but against
also against weathering and other atmospheric effects. पेंट और अदर ऑर्गेनिक जो कीटाणु होते हैं वो उसको हम यानी मेटल के ऊपर जंग कोरोजन जन इफेक्ट से बचाते हैं। यानी अगर हम किसी मेटल को लोहे को पेंट करेंगे तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो ये जो है ऑर्गेनिक कोटिंग है ये मेटल्स को कोरोजन से बचाता है। इसके अलावा जो मॉडर्न पेंट्स होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं और उस केमिकल्स को हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं। तो ये जो स्टेबलाइजर्स है ये कोरोजन न सिर्फ कोरोजन को रोकता है बल्कि जो वेदरिंग इफेक्ट है मौसमी जो हालात है या जो अदर एटमोसफेयर इफेक्ट्स हैं उनसे भी मेटल सरफेस को महफूज रखता है। नंबर सी इज अलाइन। अलाइन आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कोरोजन ऑफ मेटल्स। ये अलाइन जो होते हैं वो भी मेटल को कोरोजन से बचाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अलाइन इज स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टेनलेस स्टील जो है ये एक अलाई है जो जिसको कोरोजन नहीं होता। तो ये जो स्टेनलेस स्टील क्या है, दिस इज सॉलिड मिक्सचर ऑफ आयरन क्रोमियम एंड निकल। जो स्टील होता है उसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है एंड निकल होता है। तो स्टेनलेस स्टील स्ट्रांगली रेजिस्ट द कोरोजन। जो स्टेनलेस स्टील है वो यानी जंग को जो है ना ये बचाता है। जंग को जंग उसमें लिखता है जंग से यानी ये क्या होता है रेजिस्ट करता है, इसको ऊपर जंग नहीं लगता। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैब्स कंस्टिट्यूट अंडर प्रोडक्शन। तो इसके अलावा नई जो डेवलपमेंट है जो किसी ऐसी और एलाई को बनाने में जो जिसको जो मुस्तकिल तौर पर जंग को रोकेगा। तो वो भी क्या है अभी बन रहा है। इसके अलावा एक और डी में है ना वो है मेटालिक कोटिंग और प्लेटिंग। Metallic coating or plating can be applied to inhibit corrosion as well as provide aesthetic and decorative finish. Thin coating of one metal on another can be applied by spraying, galvanizing, deposition of zinc on metal by dipping, or electroplating. For example, iron articles are protected from rusting by nickel, chromium, or tin plating. तो मेटल कोटिंग जो है ना ये भी इसका भी अहम रोल होते हैं कोरोजन्स को बचाने में। तो मेटल प्लेटिंग से मुराद ये कि जो निकल की जो प्लेटिंग है, क्रोमियम की जो प्लेटिंग है या टिन की जो प्लेटिंग है वो अगर हम यानी इसको डिपॉजिट करेंगे किसी मेटल के ऊपर तो ये भी जंग को कोरोजन को रोकता है। So galvanizing यानी deposition of zinc on the metals by dipping और electroplating। यानी galvanizing जो प्रोसेस है वो क्या होता है वो डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन मेटल, मेटल के ऊपर जिंक का डिपॉजिट करना उसको हम कहते हैं galvanizing। जैसे हम निकल, क्रोमियम या टिन को मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं तो इस तरीके से हम मेटालिक जो कोटिंग है जिसकी वजह से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कोरोजन इनहिबिटर्स। कोरोजन इनहिबिटर्स are chemicals that react with the metal surface or with the environment gases which causes corrosion. कोरोजन जो इनहिबिटर है यानी chemicals that react with the metal surface or with the environment gases which causes corrosion।
they interrupt the chemical reactions that causes corrosion. These chemicals can be applied as a solution or as a protective coating or dispersion technique, glycine and polyethylene, etc. ये कह रहे हैं कि कोरोजन जो है इनहिबिटर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं जो मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं या एनवायरमेंटल गैसेस के साथ जो कोरोजन का बायस बनते हैं। तो ये जो है केमिकल्स होते हैं ये उस केमिकल रिएक्शंस को इंटरप्ट कर लेता है जो कोरोजन का बायस बनता है। ठीक है जी। एंड ये केमिकल अप्लाई सोल्यूशन फॉर्म में इसको ऊपर इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं या प्रोटेक्टिव कोटिंग की सूरत में हम इसको ऊपर लगाते हैं। यानी टेक्निक कौन सी टेक्निक के जरिए से, डिस्पर्शन टेक्निक को ग्लाइसिन और पॉलीइथाइलिन जो इस तरीके से हम कोर्सों को बचाते हैं बाय मीन्स ऑफ metallic coating or plating. So next one is cathodic protection. Cathode protection is a method usually used to protect iron in buried fuel tanks or pipelines. Electric metals such as magnesium or zinc is connected by wire to the pipeline or tanks to be protected. It is because of the magnesium, zinc is a better reducing agent than iron. Electrons are supplied by the magnesium or zinc rather than by the iron, keeping the iron from being oxidized. Oxidation occurs, the magnesium or zinc cannot dissolve and so it must be replaced periodically. तो कैथोडिक जो प्रोटेक्शन है वो क्या होता है? कैथोडिक प्रोटेक्शन ये वो मेथड है जिसमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं आयरन बचाने के लिए। यानी जो फ्यूल टैंक या पाइपलाइन जो आयरन से बने होते हैं उसको ऊपर जंग को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए उनको उसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये क्या होता है, एक्टिव मेटल यानी कि एक्टिव मेटल जो होता है जैसे मैग्नीशियम या जो जिंक है वो उसको हम एक वायर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसको फिर पाइपलाइन के साथ लगा देते हैं। यानी उस एक्टिव मेटल मैग्नीशियम और जिंक को एक तार के साथ बांध के उसको फिर पाइपलाइन के साथ मिलाया जाता है या टैंक के साथ उनको मिलाया जाता है जो प्रोटेक्टर होता है। इट इज़ बिकॉज ये इसलिए लगाते हैं ताकि द मैग्नीशियम जो जिंक होते हैं ये बेटर रिएक्टिंग एजेंट आयरन से बेस्ट रिएक्ट करते हैं। यानी तो ये भी क्या करते हैं, तो ये जो मैग्नीशियम और जिंक है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं मैग्नीशियम और जिंक। यानी फिर जब हम मैग्नीशियम और जिंक को आयरन के ऊपर लगा देते हैं तो फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आयरन की बजाय फिर मैग्नीशियम या जिंक दे देते हैं जिसकी वजह से जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, यानी ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ऑक्सीडेशन होता है मैग्नीशियम और जिंक को डिजॉल्व हो जाते हैं एंड सो इट मस्ट बी रिप्लेस्ड रेडिकली। यानी वक्त के साथ साथ तो जब मैग्नीशियम और जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ आयरन, तो इसको वक्तन फवक्तन रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा शिप्स हल्स आर प्रोटेक्टेड इन सिमिलर way by attaching bars of titanium
titanium metal to the steel hull. In salt water, the titanium acts as a anode and is oxidized to instead of the steel hull. तो ये कह रहे हैं कि जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, उनको भी जंग से कैसे बचाया जाता है। तो उसके लिए ये करते हैं कि उसके लिए टाइटेनियम मेटल है, टाइटेनियम टाइटेन टाइटेनियम जो मेटल है, इसको यानी इसको क्या करते हैं, इसके जो बड़े बड़े बार्स होते हैं, यानी उसको स्टील जो शिप का जो स्टील हल होता है उसके साथ लगाए जाते हैं। तो अब साल्ट वाटर जो होता है, इन सॉल्ट वाटर द टाइटेनियम एक्स एज ए एनोड। तो सॉल्ट वाटर में जो टाइटेनियम जो लगा लेते हैं वो एज ए एनोड काम करता है, और ये ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो फिर ये जब एज ए एनोड काम करता है तो फिर ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, यानी एनोड को ऑक्सीडेशन होती है। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है स्टील के बजाय, यानी स्टील को जो कैथोड होता है उसकी बजाय फिर ये स्टील इलेक्ट्रॉन नहीं लेता बल्कि टाइटेनियम जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो लिहाजा जो शिप्स है उनको फिर जंग नहीं लगता। ये जहाज दिखाया गया इस तरह, ये यहाँ पर मैग्नीशियम, the heavy blocks of magnesium attached to the underground pipe made up of iron to protect the pipes from rusting। ये मैग्नीशियम का लगाया गया साथ इस ये जो पाइप पाइप जा रहा है, ये वाला पाइप है, इसके साथ ये लगाया गया है, ये पाइप है, इसके साथ ये लगाया गया मैग्नीशियम ब्लॉक से, ताकि इलेक्ट्रॉन पे ये मैग्नीशियम दे दे इंस्टेड ऑफ iron, so it prevents rusting of this pipeline। Similarly, ये जो टाइटेनियम है, ये टाइटेनियम इसको लगाया गया है, bars of titanium can be fixed to a sheep, but to a sheep to prevent the sheep's steel body from rusting। यहाँ पर जो ये है, इसको टाइटेनियम को लगाया गया है ताकि शीप की बॉडी उसको रस्टिंग से बचाया जा सके। ये जो टाइटेनियम बॉडी पर इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है इंस्टेड ऑफ स्टील बॉडी, सो देयरफॉर रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। Next one is electroplating of tin, zinc and chromium on steel, an electrolytic process in which thin layer of one metal is deposited on another metal surface। तो ये जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है जिसमें एक थिन लेयर जो मेटल की होती है वो दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है। मेटल्स आयंस इज रिड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से फिर मेटल आयंस होते हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं जब हम उसमें से करंट पास करते हैं, एंड सॉलिड मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिंग। In electrolytic cells, the metal which is to be deposited is made anode and the cathode is made up of metal on which deposition takes place। The electrolyte is an aqueous solution of salt of the respective metal which is to be deposited on the metal। तो ये जो है electroplating of metals। So next one is you can say that purpose of electroplating, purpose क्या है,
तो इसके बाद पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या मकसद है? तो प्रोटेक्शन, to protect the inner metal from the atmospheric effects, that is from corrosion. यानी जो मेटल इनर मेटल सरफेस है उसको एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स या कोरोजन से बचाने के लिए उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल ऑफ निकल, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है तो निकल और क्रोमियम्स उसको ऊपर चढ़ाया जाता है मेटल सरफेस के ऊपर, या जिस तरह आयरन है, तो इस तरीके से प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन, उसको कोरोजन से हम बचा सकते हैं. So number second is repair. To weld the broken parts of the machinery by depositing the metal on it. यानी रिपेयर का भी तरीका है कि हम अगर वेल्ड करें ब्रोकन पार्ट्स होते हैं मशीनरी के और उसके ऊपर मेटल डिपॉजिट करें, तो इसके अलावा decoration to deposit noble metals, gold and silver on an inferior metals to enhance its beauty. इसके अलावा हम नोबल गैसेस गोल्ड या सिल्वर को भी उनके ऊपर डिपॉजिट करते हैं तो खूबसूरत बनाने के लिए भी, और उनको जंग भी नहीं लगता. प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रोसीजर के in electroplating the metallic substance to be electroplated is cleaned with sand, washed with caustic soda, and it lost to thoroughly washed with the water. The clean substance is made cathode, a sheet of rod of pure metal to be deposited is made anode. Salt of that metal which is to be deposited is taken as an electrolyte. The process is carried out in electrolytic cells. The electrolytic cell is made up of glass, cement, wood, in which the electrodes are immersed. These electrodes are connected with the terminal of the battery, and the electric current is passed through the metal from the anode, converts the ions in solution, and these metallic ions are deposited on the cathode. As a result of the discharge of deposition, a thin layer of metal is deposited on the object. The cathode is pulled out of the electrolytic cell, clean and dried. तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीका कार बताया गया है. Next one is electroplating of tin. The target metal is cleaned with caustic soda. यानी पहले हम जो जिसके ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो वो जो टारगेट मेटल होता है उसको पहले caustic soda से क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद एसिड से क्लीन करेंगे ताकि ये जो है रस्ट है या जो ऑयल जो वो रिमूव हो जाए. यानी कास्टिक सोडा और एसिड से हम इसको वॉश करेंगे ताकि ऑयल और ये जो रस्ट वगैरह ये रिमूव हो जाए, ये ग्रीस वगैरह जो लगा हो वो सारा रिमूव हो जाए. अगर उसके ऊपर पड़ा हुआ है तो वो रिमूव हो जाए. उसके बाद इसको पानी से वॉश करते हैं. दिस वॉश thoroughly with water. The electroplating of tin is carried out in electric cells. उसके बाद फिर इसके ऊपर ना टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है और ये इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर होती है, और इस प्रोसेस में प्योर पीस ऑफ टिन एक्ट्स एज ए एनोड. तो इस प्रोसेस में जो प्योर पीस ऑफ टिन होता है ये एज एनोड काम करता है, और ये हम सोडियम स्टेनर इसको हम डिप करते हैं. सोडियम स्टेनर को हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं. The cathode is the object to be coated with tin. कैथोड के ऊपर हम जो है ना ये कोटिंग होती है टिन के साथ,
when the electric current is passed through the cell, so when the electric current is passed uh, through the cell, the anode starts dissolving. The anode starts dissolving and convert into Sn plus 2 ions. Sn plus 2 ions. So this is Sn plus 2 ions. The Sn plus 2 ions move towards the cathode. At the cathode, they discharge and deposit it on the object. Chemical reactions can be represented such as, you can say, at anode the tin is oxidized into plus 2 form. Sn plus 2 electrons will be lost. So that occur at anode. While at cathode of Sn plus 2, you can say that Sn plus 2 gains 2 electrons to produce Sn in solid form. So you can say this is reduced. So you can say that here the Sn is in a zero oxidation state, and here Sn is plus 2 oxidation state. Plus 2 oxidation state. So oxidation state is increased from 0 to plus 2. So it means that at anode, you can say oxidations occur by losing of 2 electrons. At cathode, you can say Sn is in plus 2 form. You can say this one, this Sn plus 2 until will gain 2 electrons and form Sn solid form. So here tin is plus 2 oxidation state, and it will convert it to 0 oxidation state. So in this case, tin is oxidation state is reduced from 2 to 0. So it means that reduction occurs because reduction occurs because oxidation state is reduced from plus 2 to 0, so reduction occurs. So we can say that this is the strip of tin metal. This one, and this is the tin chloride solutions. This is the tin atoms, and this is the strip of iron metals. So you can say it's a power pack. So this is the electroplating of tin. So this is the electroplating of tin on this strip of metal surface, you can say. So this is the electroplating of tin on metal surface. So electroplating of zinc. The target metal is cleaned. यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग को जिंक हम कैसे करेंगे? टारगेट मेटल इसको हम पहले क्लीन करेंगे एंड वॉश thoroughly with water. इसके ऊपर हमने जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है. जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस मेटल के ऊपर हमने करनी है, उस मेटल सरफेस को हम पहले क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, साफ करेंगे.
और फिर साफ कैसे करेंगे? पहले तो हम इसको पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद फिर उसको हम जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डीप करेंगे, जो जिसमें थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड हो सोल्यूशन मौजूद होता है, और ये एज इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। तो वो जो अब जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वो एज ए कैथोड काम करता है, जबकि एनोड जो होता है वो जिंक प्लेट का होता है, राड हो। जब हम इलेक्ट्रिक करंट हो उसमें से पास करते हैं तो जिंक एनोड डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व एंड कन्वर्टेड टू जिंक प्लस 2 ions. The electrons move to the cathode, इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाते हैं, where zinc ions discharged and deposited on zinc metal. तो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ जाते हैं जहाँ पे zinc ions discharged हो जाते हैं and deposited on zinc metal. The chemical reactions represented is, so this is the chemical reaction, one. So this is the anode, zinc is oxidized from Zn to Zn plus 2 by losing 2 electrons. At cathode, this zinc gains 2 electrons to form zinc. You can say zinc metal. So here zinc is in 0 oxidation state, and this is zinc in plus 2 oxidation state. It means that zinc is oxidation state is increased, so it means that oxidation takes place, while this is secret anode. Oxidation takes place at anode, while at cathode you can say reduction occur, because this zinc will again gain 2 electrons to produce zinc metal. So this is the zinc oxidation state plus 2, and this is the zinc in 0 oxidation state. So in this case again, oxidation state is reduced from plus 2 to 0, so it means that reduction occurred. Reduction occurred at cathode. Now, next one is electroplating of chromium. The electroplating of chromium is carried out in electrolytic cells. In this process, pure piece of chromium acts as a anode and is dipped in chromic solution containing small amount of sulfuric acid. The object to be electroplated acts as a cathode. The electrolyte ionizes and produces the chromium ions. At cathode, they discharge and deposited on the object. You can say that electroplating of chromium. Electroplating of chromium कैसे होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते हैं। इस प्रोसेस में प्योर पीस ऑफ क्रोमियम यानी एज ए नोट काम करता है, और इसको हम क्रोमिक एसिड सॉल्यूशंस जिसमें थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें डीप करते हैं। तो ऑब्जेक्ट यानी वो ऑब्जेक्ट जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटेड करना होता है वो एज ए कैथोड काम करता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं आयनाइज हो जाता है और प्रोड्यूसेस सी और क्रोमियम प्लस 3 cathode के ऊपर, and they discharge and deposited on the object. So you can say the anode chromium is converted into Cr plus 3 oxidation state by the laws of 3 electrons, and Cr plus 3 will can 3 electrons to produce chromium metal. So this is the oxidation, this is the reduction. So in this case, by the oxidation reduction
process we can carry out the electroplating of zinc, chromium. Chromium. So this is the chromium. So we can say the chromium is here again in 0 oxidation state, and here is in +3 oxidation state. So this is increased from 0 to 3, so oxidized. So here is +3 oxidation state, and this is converted into 0. From 3 to 0, this oxidation state is reduced, so reductions occur. So this is the electroplating of chromium. So these are the key points of chapter number 7, which will be discussed in the next video. Next lecture.